So, after discussing the in our previous classes about the discriminatory practices in the work field and also about the glass ceiling and the sticky floors which prevent women from reaching the top positions, let us know about women and gender pay gap. So, what is this pay gap? If I will just simply say you that women do not get equally paid as men get, you won't believe me. जदि मु कहे जे स्त्री लोक माने से एका काम पई पुरुष लोकंटू कम पैसा पाती ताले हुए तो तम माने पिला माने विश्वास करि ना पार बट इट इज देयर इन आवर वर्क फील्ड किंतु प्रकृत रे इफ वी विल सी इट इन ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आमे जदि टिके क्रिटिकली एग्जामाइन करी देखिबा ताले सेटा एक्चुअली सत्य कथा एका भलिया काम करी उभय पुरुष और स्त्री लोक माने एका दायित्व रे थाई कि एका भलिया काम करी भी पुरुष लोक माने अधिका पैसा अर्न करती एवं स्त्री लोक माने कम पैसा पाती सो एटा दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सो लेट अस सी इन दिस क्लास व्हाई दिस हैपेंस एटा काहे की होउची एवं काहे की ए जो पे गैप को बंद करिवा पई ए गैप को कम करिवा पई आमे सब कोन करि परिबा इन व्हिच वे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग दिस पे गैप सो इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क हैज सीन सम encouraging improvements because people have been engaged continuously. The state has been engaged continuously to eliminate this inequality between men and women in the employment field. So that is how now we are getting or we are getting to see a place in the employment market for women which gives them some sort of equality or which gives them some sort of equal status you can say. But still there are lots and lots of problems, issues are there actually for which women themselves are struggling, for which we all should raise our voice. So let's see what is the pay gap. How can you understand the pay gap? Let me give you a very simple example and then I will go to the theoretical part. पिला मन तम माने समस्त देखिथिबो तम घर मानकरे आमे समस्त बेसिकली गारू आछे हम घर मानकरे जो काम करंती जो निर्माण श्रमिक माने जो काम करंती गाँ रे बा शहर रे एका जगह रे काम करथिबे कॉन्ट्रैक्टर अंडर रे काम करथिबे पुरुष और स्त्री लोक माने किंतु पुरुष लोक मानकु अधिका पैसा दिया हुए स्त्री लोक मानकु कम पैसा दिया हुए हावेंट यू सीन इट तम माने समस्त एक कथा देखिथिबे हावेंट यू मार्क्ड इट कि एमिति कि किछि किछि स्किल्ड काम रे मध्य जो काम रे स्किल दरकार पड़ुची से सब काम रे मध्य इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द स्टेट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑलरेडी अनाउंस्ड ए मिनिमम सपोर्ट गोटे मिनिमम वैल्यू गोटे मिनिमम वेजेस दिन पई डिक्लेयर करिछि स्टेट दैट इज दैट से प्रोविजन अछि एवं आज एते दिन पर एते प्रकार लड़ाई पर स्टेट एते प्रकार सुविधा करबा परे मध्य वी आर सीइंग दैट देयर इज अ लार्ज पे गैप बिटवीन वुमेन एंड मेन डूइंग द सेम वर्क सो ए जो कथाटा मु कहली निर्माण श्रमिक माने बा आम घर मानकरे काम करूथुबा लोक माने एटा खाली तमे भाबनी जे खाली एमती छोट छोट जगह रे बा लोअर लेवल्स रे होची इफ वी विल इमेजिन अबाउट हॉलीवुड और बॉलीवुड you can know that in a better way but before going into the examples let's understand what is pay gap so till date women and men do not earn the same amount for doing the same kind of work so this is clear now by this time that for the same kind of work men and women in this world are not paid equally so if you believe that then let's go deeper into it the report says that across the world women still get paid 23% less than men 23% less than men. So for the same kind of work, for the same kind of responsibilities, women are paid 25% less than men. So isn't it 23% less than men? Isn't it isn't it something which sounds very bad to our ears? Isn't it creating a kind of gender inequality in the work field, in the psyche of the people who are engaged in this work? जो माने ये काम करूचंती जो स्त्री लोक माने काम करूचंती एका भलिया किंतु से माने कम पाउचंती तांको साइकी को इटा अफेक्ट करू नथिबो कि पिला माने सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सो वुमेन एंड जो एग्जांपल सब आगरु देली मु आम गाँ कथा बा आमानक घर कथा बा आमानक शहर कथा मु कहली बट मु ए जो डाटा दोची एटा हो होल वर्ल्ड खाली भारत रे नुहे कि ओडिसा रे नुहे सारा पृथ्वी रे सारा ग्लोबली यूनिवर्सली स्त्री लोक मानकु 23% कम पेमेंट मिले कम अर्निंग्स मिले देन
मेन फॉर द सेम वर्क जो मैंने एका काम कर सो वुमेन कहीं मिले कहीं हुए ना वुमेन कैन नॉट निगोशिएट वुमेन माने निगोशिएट करें जुक्ति तर्क करके निजपाई निगोशिएट करें जे आई कांट डू दिस विथ सच मनी एतिकी टंकार मुझे काम करी ना मत एतिकी टंका दि जाऊ यहाँ से मैंने करें वुमेन कैन बार्गेन टू गेट प्रॉपर्ली रेम्यूनरेटेड फॉर देयर लेबर पावर तांकर बार्गेनिंग कैपेसिटी भी कम सो कौन कौ सब कारण जो निगोशिएटिंग कैपेसिटी जितेबाला कि कहुए जे वुमेन आर बॉर्न निगोशिएटर्स बट इन द वर्क फील्ड व्हाई डज इट वर्क इन द रिवर्स वे किंतु एम्प्लॉयमेंट फील्ड रे किंबा वर्क फील्ड रे आम घर सब निगोशिएशन करुवा स्त्री लोक मैंने सब संपर्क को बांधुवा स्त्री लोक मैंने सब बेले अलग मान संगे निगोशिएशन में व्यस्त था सफल निगोशिएटर भाव में स्त्री लोक मानक नि जाए आग किंतु वर्क फील्ड रे कौन हो काम करवा जगह कौन हो पैसा पाइबा जगह कौन हो वुमेन माने बार्गेन कर they are very bad bargainers or their bargaining capacity comes low तांको bargaining capacity तलू आसी जाउची gender pay gap is hidden gender pay gap होची गोटे hidden criteria मुझे प्रथमे कहली जे गोटे gender pay gap रही many of you may not have believed this at all बहुत जने believe not only people like you or students like you adult people also can believe this when I say that there is a gender pay gap so this is a hidden thing एटा लुचिकी रही अच्छी किंतु लुचिकी रही सो बट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस रही लुचिकी रही एवं एटा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गोटे बहुत बलिष्ठ प्रमाण गोटे बहुत बड़ प्रमाण जे वर्क प्लेस रे आमर एबे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रही सो आम देखा जे कौटी बेसी अच्छी मुझे कहली निर्माण श्रमिक कि घर कम करने को आसुवा लोक मैंने कि से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे बेसी देखा जाए बेसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे देखा जाए ये जो पे गैपटा कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहले आम मन सपोज मु कहबी जे ये जो हाटर जो बसंती स्त्री लोक मैंने से घर कम सब कर सारिक आसिक हाटरे बसती बट दे आर वेरी बैड बार्गेनर से जिनसा बिक्री करते सब टी कम पैसा दे दिखती से सेक्टर जो मैंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहले जोटा सीधा सड़क भाव में सहज भाव में कहले कौन ना जोटा ऑर्गेनाइज नुहे असंगठित क्षेत्र कौन असंगठित क्षेत्र जहाँ सरकार राष्ट्र अधीनस्थ नुहे जहाँपाई राष्ट्र नियम कानून लागू हुए ना जहाँ एबे भी संगठित हो पारि नाही बा जहाँ रही सरकार नियंत्रण बाहर रही जहाँ को रेकग्नाइज करा जाए ना संगठित क्षेत्र भाव व्हेन आई गिव ऑल दिस मीनिंग्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड देन यू कैन अंडरस्टैंड कौ लोक मैंने कौ काम को आम अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड काम कहूचे अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड काम जगार बेसी यहाँ देखा जाए that doesn't mean that it is not seen in the organized field बहुत बड़ा जगह now I will give you an example मु जो कथा कहूली अधारे रही सिनेमा इंडस्ट्री जो ग्लैमर इंडस्ट्री जगह खाली सिनेमा कहीं ग्लैमर इंडस्ट्री जगह मे इट बी मॉडलिंग मे इट बी एडवर्टाइजमेंट मे इट बी टीवी मे इट बी सोशल मे इट बी आवर सिनेमा सो यही सब जगह मानक जो यूट्यूब सिनेमा हो छोट सिनेमा नहीं बड़ सिनेमा जगह यही सब जगह यू मस्ट नो दैट तमें समस्त पिला माने जानी जे द मैन हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ ए हीरो ही गेट्स मच मोर दैन द वुमन हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ ए हीरोइन सो दिस इज ए पे गैप व्हिच इज क्लियरली विजिबल टू आवर आईज इवन इन ए फील्ड व्हिच यू कैन से व्हिच रिप्रेजेंट्स द ग्लैमर वर्ल्ड जहाँ बहुत ग्लैमरस देखा जाए जहाँ बहुत चिक देखा जाए जो पृथ्वी बाहर को आम जो हीरोइन मानू देखी भावुचे बा से केते धनी किंतु सेमाने भी ये कथाटा को सहयोग करुँच कहीं भी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम बिकज दे आर ऑल्सो वुमेन सिनेमा हिरोइन भी बाहा होती सिनेमा वुमेन भी सिनेमा हिरोइन माने भी मदरहुड रोल को जाऊँच सिनेमा वुमेन रे काम करुवा वुमेन माने मध्य केयर वर्क किछि करुँच एंड फॉर ऑल दिस फैक्टर्स से भी निगोशिएटिंग कैपेसिटी कम रोचे एवं से जदियो अधिका पैसा अर्न करुँच किंतु इन कंपैरिजन टू मेन से भूमिकार थिबा पुरुष लोक से कम पाँच यह निश्चित भाव सत्य तेणु आम जानीपारे जे घरे कम करुवा लोक आरंभ करी आम जदि गोटे क्या गोटे लोक को टे अल्प टे कम करने भी डाकुचे से भी घंटिकिया मजूरी नौ कि स्त्री लोक मानक दिन सारा घरे आम कम करोचे जो लोक जो मजूरिया मानक आनिक आम बहुत कम दौचे पैसा यहाँ गोटे यही जगह आरंभ हो सबूक जिते प्रकार असंगठित क्षेत्र
क्षेत्र निर्माण श्रमिक मान तो निश्चित भाव में बहुत कम पाती सबु क्षेत्र में सिनेमा इंडस्ट्री मध्य सबुठी एका काम पाई एका दायित्व पाई स्त्री लोक मान को कम पैसा दि जाउची। ए जो जेंडर पे गैपटा एटा कौन कौन इंडिकेट करुची आमे देखिबा। Firstly, it indicate करुची there is large scale inequalities faced by women in their access to work काम करिबा पई तांक से माने लार्ज स्केल इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज तांक पई लार्ज स्केल इनइक्वाल रहुची एंड देन प्रोग्रेस ऑफ कैरियर पई भी तो रहुची एवं खाली प्रोग्रेस ऑफ कैरियर नै द रिवार्ड्स दैट दे गेट आमे काम करूचे आमे काम बोली काहा को कहूचे जो जेंडर पे गैप को मु कहूची काम क्षेत्र रे पे गैप रहूची काम बोली आमे काहा को कहूचे राष्ट्र हमको काम रो गोटे संज्ञा देची से सब कथा हला काम जहा पई आमे पैसा पाउचे बाहर जाई करूचे एवं पैसा पाउचे से रेम्युनरेशन जो कम हो जाउची सो दैट मे बी नोन आज दे आर गेटिंग लेस रिवार्डेड से माने कम रिवार्डेड होचंती काहेकि ना एक तो मु गोटे क्लास रे कहितली से माने टॉप पोजीशन को जिबारो डिबार होचन से मानक पई स्टिकी फ्लोर्स अछि से मानक पई ग्लास सीलिंग्स रहिछि जेंडर प्रैक्टिसेस रहिछि डिस्क्रिमिनेशन रहिछि ए सब सत्वे आउरी भी असुविधा होछि जे जेतेबेले से मानक कम पैसा दिया जाउछि। सो व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स दैट शुड वुमेन पे लेस फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क दैट मेन आर डूइंग जेतेबेले से माने से एका प्रकार काम करूचंती तांको कम दबाटा पैसा दबाटा केते दूर यथार्थ बा केते दूर जस्टिफाएबल बोली आमे पचरी परिबा। सो दिस पे गैप इज वाइडर फॉर द पार्ट टाइम वर्कर्स पार्ट टाइम लोकंक पई जो माने पार्ट टाइम काम करूचन जो स्त्री लोक माने सेमानक पई ए पे गैपटा बहुत अधिका लंबा होता है जो माने घंटिकिया काम करूचन जो माने 2 घंटिया काम करूचंती जो माने कम दिन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स सेमानक पई ए पे गैप आहुरी बेसी होता है। तापरे पार्ट टाइम काम रे बेसी स्त्री लोक माने थांती काहेकि पार्ट टाइम काम रे बेसी स्त्री लोक माने थांती ना से माने अफोर्ड करि पारंतनी बहुत समय तांकर केयर वर्क और मदरहुड रोल्स पई फुल टाइम जॉब टा अफोर्ड करि पारंतनी जो वर्क लाइफ बैलेंस करिवा पई जाई कि से माने पार्ट टाइम काम करंती खाली वर्क लाइफ बैलेंस नुए पिला माने बेले बेले भी देखा जाए जेहेतु स्त्री लोक मानक पाखरे पाठ पढ़िबार अपॉर्चुनिटीज कम थाए एवं फुल टाइम काम बा टॉप पोजीशन काम रे बेसी स्किल दरकार पड़े बेसी एजुकेशनल ट्रेनिंग दरकार पड़े से भी स्त्री लोक माने पार्ट टाइम काम करूथांती कहीं स्किल लेबर आ अनस्किल लेबर या भितर गोटे पे गैप रहिबो निश्चय या भितर गोटे पैसा पाइबार द रिवार्ड बिटवीन द रिवार्ड दैट द स्किल लेबर विल गेट मस्ट बी लेस देन द रिवार्ड दैट द unskilled labor is expected to get. So women are mostly in the positions of the unskilled laborer आमे दे लेबर कथा कहबा लेबर क्लास रे women are mostly unskilled ही रह जांती कहीं से मानक पाखरे एक तो सुजोग नहीं स्किल्ड हबार अपॉर्चुनिटी कम अच्छी द्वितीय रे से मानकर केयर वर्क आ मदरहुड वर्क अच्छी एवं पार्ट टाइम काम करिवार भी आ गोटे आ गोटे से मानकर आ गोटे वुमेन माने एथि पई भी ऑप्ट करंती पार्ट टाइम करिया बिकॉज दे वांट टू डू द जॉब इन द प्रॉक्सिमिटी in an area which is accessible to them by which they can come back to take care of the elderly people by which they can come back to their home for taking care of their children घर कथा बुझी पारिबे घरे थिबा शिशु बा वयस्क मानकर जत्न नै पारिबे सेति पई भी स्त्री लोक माने बहुत समय गोटे पाखरे थिबा काम खोजंती एंड दैट आल्सो हैम्पर्स देयर एटा भी वाइडन करे जेंडर गैप पे गैप को आउ स्त्री लोक मानकर जो अधिका पैसा पाइबार सुविधा बा सुजोग को सेटा भी गोटे हैम्पर करे। So women prefer part-time jobs to balance, to bring a work-life balance, work-care balance. Part-time works are less available in top positions. It is known that in top positions, part-time works are not at all available. So part-time works are mostly in the lower positions because top positions are the permanent positions. These are the fixed positions, very rigid positions. They don't allow part-time people to go up to the top positions. So for these reasons, women are mostly in the part-time positions. When I say women are mostly in the part-time position, that means as part-time workers, they are also getting less paid. So let's see where and how gender pay gap has started. Gender pay gap is not started here only. I told you that gender pay gap is not seen in our country, neither in India nor in Odisha only. It is a global scenario. It is a global phenomenon. It is an universal phenomenon. पृथ्वीर सबु जगार जेंडर पे गैप अच्छी एवं पृथ्वीर सबु जगार जेंडर पे गैप पाई सबु बेले संघर्ष चली स्त्री लोक माने संगठन माने सबु बेले संघर्ष करि चलचंती
दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट यू मस्ट नो स्टूडेंट्स गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा जे तुम मैंने जाना कथा आज जो फेमिनिज्म मूवमेंट होची बा आमे जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट करचु मार्च 8 रे से वुमेन्स मूवमेंट फर्स्ट एवर वुमेन्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द कॉज ऑफ दिस जेंडर पे गैप ये जो जेंडर पे गैप यूएसए रे गोटे जगह गारमेंट्स इंडस्ट्री रे काम करुवा स्त्री लोक मानकू बिकॉज दे वर लेस पेड एंड कंटिन्यूअसली लेस पेड देन देयर मेन कलीग्स सो दैट इज व्हाई दे रिवोल्टेड against that and so the first ever women's fight against this gender pay gap came into picture जहाँ को आमे कहूचे सेनेका फॉल्स कन्वेंशन so Seneca Falls Convention of 1848 you can imagine 1848 रे भी स्त्री लोक माने काम करुथिले वर्क फील्ड रे थिले एंड 1848 रे से स्त्री लोक माने दे वर आल्सो अवेयर दे सम ऑफ देम एक्चुअली सम वुमेन हु वर वर्किंग दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट दिस एंड दिस इज a long history that's why we say that this has a long history gender pay gap till today आज पर्यंत जो समस्या रही जे पुरुष और स्त्री लोक मान भितर गोटे पे गैप रही गोटे टंका पाइबारे पैसा पाइबारे कामर परिवर्तन जो पैसा मिले जो रेम्यूनरेशन मिले जो वेज मिले पारिश्रमिक पाइबारे जो पार्थक्य रही जहाँ को आम जेंडर पे गैप बोली कहूचे सेटा नुआ कथा किछि नुहे बहुत पुराना कथा बरम वर्तमान सेटा कमी कमी आसलानी बिकज वी टुडे आम आज देखुचे प्राय अधिकांश सरकारी चाकरी संगठित क्षेत्र में ये जेंडर पे गैप बहुत कम अंशर देखा जाउची एकदम नेग्लिजिबल देखा जाउची किंतु एबे भी पार्ट टाइम क्षेत्र में अच्छी एवं 1848 रो जो वुमेन्स मूवमेंटा फर्स्ट वुमेन्स राइट्स मूवमेंट इन यूएसए this is the first women's rights movement which was ignited by this gender pay gap only ए जेंडर पे गैप ही सेनेका कन्वेंशन आसला सो तापर भी आम देखुचे जे यूएन कन्वेंशन जो सीडो आसला 1979 ने कन्वेंशन सीडो स्टैंड्स फॉर UN CEDAW, this is a very remarkable convention actually for women, for the protection of the interests of the women or for removing gender inequality from this world. This convention is a very remarkable convention which says that convention on elimination of all kinds of discrimination against women, CEDAW. So, discrimination of all kinds of the elimination of all kinds of discrimination against women also includes elimination of discrimination of this pay gap in the work field. So ये जो सीडो आसला 1979 ने एथिरे भी कहगला जे सबू पे डिस्क्रिमिनेशन को भी सबू डिस्क्रिमिनेशन सहित वुमेन मानकर सबू डिस्क्रिमिनेशन सहित पे डिस्क्रिमिनेशन को भी बंद करा जिवो बा एलिमिनेट करा जिवो तापरे एबे आमे द रिपोर्ट से दैट वुमेन इन इंडिया ऑन 19% आमे 23% देखुचे वर्ल्ड सिनेरियो रे किंतु वुमेन इन इंडिया आर लेस paid. This is India data. This is the data of India and this is the world data. So India re 19% less paid. Women are less paid 19% than men. Women माने स्त्री लोक माने आम देश रे पुरुष लोक ठारू 19% कम पेमेंट पाउछंती एवं सेटा केते कम होची ना 46 टंका 19 पैसा कम पुरुष माने स्त्री लोक मानकठू आम देश रे 46 टंका 19 पैसा अधिका पाउचंती तांको एका काम पई 46 टंका 19 पैसा अधिक दिस इज नॉट ए वेरी स्मॉल गैप एक्चुअली सो दिस इज 20% जो वुमेन माने जो गैपटा ए जो गैपटा वुमेन माने जो पाउचंती कम जेंडर गैप बोले हम जा कहूचे एटा 20% अच्छी स्किल्ड फील्ड रे एंड 30% अच्छी हाईली स्किल्ड पोजीशन ने 20% अच्छी जो स्त्री लोक मैंने स्किल्ड खाली अनस्किल्ड पोजिशन नुहे स्किल्ड पोजिशन में जेंडर गैप जेंडर पे गैप 20% रही एवं हाईली स्किल्ड जो पोजिशन गुड़ाक सेठी भी रही 30% रही सो सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इन इंडिया से सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च इन इंडिया 2019 ने गोटे ड्राफ्ट बिल आनी this is a very hopeful draft this is a very hopeful bill that ei jo policy law au policy research pai center for law and policy research gender pay gap को कमेबा pai गोटे रिसेंटली गोटे ड्राफ्ट आनी गोटे बिल गोटे ड्राफ्ट आसी जोटा को कह जाउची इक्वालिटी बिल ए ड्राफ्ट रा ना होची इक्वालिटी बिल which
stands against all kinds of discrimination, or which stands against all kinds of pay gap, all kinds of discrimination in the field of the work, or particularly the gender pay gap. So gender pay gap should not be there. And ଯେତେବେଳେ gender pay gap ହୁଏ, ଗୋଟେ ଏକା ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକା ଭଳିଆ ପଇସା ପାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ତାହେଲେ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି. ସୋ ଜେଣ୍ଡର ପେ ଗ୍ୟାପ୍ should not exist there, neither in India nor anywhere. And particularly if we will discuss about Indian constitution, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭାରତର ସିନେରିଓ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 39D ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 41 ରେ equal pay for equal work. These are all coming under DPSP, Directive Principles of State Policy, Chapter 4, which covers from articles 36 to 51. 36 to 51 article जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रही आम निज कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ को आम ओडिया रे राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति समूह बोली कहूचे. 36 रु 51 जाए जो आर्टिकल अच्छी ता भीतर 39D आउ आर्टिकल 41 कैटेगोरिकली सेज दैट ऑल शुड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल रेम्युनरेशन फॉर इक्वल वर्क. संविधान आमको कही जहाँ को आम देशर सर्वोच्च आईन बोली कहू. संविधान आमको कही जे आम निश्चित भाव में एका काम एका पैसा पाइबा कथा. एवं संविधान कही सारा पर स्टिल वी गेट लेस पेड, स्टिल वुमेन गेट लेस पेड. ता सत्वे भी लेस पेड पाउची. मिनिमम वेजेस एक्ट भी इंडिया रे प्राय 1948 रु हो जाइए मिनिमम वेजेस एक्ट. इंडियन गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट 1945 रु प्रणीत करने सत्वे सेटा एपर्यंत भी एनफोर्सड एवं एपर्यंत सेटा एम्प्लॉय आउ एम्प्लॉयर उभयों ऊपर सेटा एनफोर्स हवा सत्वे एपर्यंत भी जदि इफ वी आर फाइंडिंग स्टिल देयर इज अ जेंडर पे गैप, then it's naturally it's very unfortunate and we all should stand against this. So irrespective of all these provisions of legislation, irrespective of all these important things, all these important steps taken by the state and taken by the government, the World Economic Forum on Global Gender Pay Gap 2020 records that India ranks 117th in terms of wage inequality. So here is the fact sheet. एते कथा करिबा परे मध्य सरकार एते प्रकार नियम कानून आनिबा परे कॉन्स्टिट्यूशन एते सुविधा हेबा परे मध्य द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन ग्लोबल जेंडर पे गैप 2020 जोटा वेरी रिसेंट से कहूची जे इंडिया रो रैंक होची 117th टर्म्स ऑफ वेज इनइक्वालिटी. इंडिया रो रैंक होची 117th. वुमेन आर पेड 34% लेस देन मेन फॉर द सेम जॉब. Women in India earn 19% less than men. These are the, and also we know that जो इक्वालिटी बिल कथा मु कहली से आर्टिकल 14 आउ 15 कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 14 आउ 15 अच्छी ताको इफेक्ट देवाई इक्वालिटी बिल काम कर. कॉन्स्टिट्यूशन 14 आउ 15 ने कौन कौन सब कौन रही पे गैप को कमेवा भाया कौन रही ना. 14 सेज दैट लीगल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. So the women can appeal to the law if they cannot get equal payment. That is coming as one of the perspectives or as one of the effects of Article 14. Article 15 ने जमती आमे देखुचे जे public employment field रे across no sex gender ए सबु barriers को किछि भी रहिबो नै, समस्तन को equal opportunity मिलिबो. So that also ensures that women should be equally employed in the employment market. Women should be equally rewarded in the employment market. Women should be equally respected in the employment market. So when after discussion of all these factors, after discussing all these about the gender pay gap, now we can come to the conclusion that there is a gender pay gap, starting from the very small jobs, starting from the very tiny jobs, starting from the very small jobs of the unorganized field up to the cinema industry. There is a gender pay gap against which boys and girls we should all work, we should all raise our voice. आमे समस्ते कहवा कथा झील मान बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेबा कथा, नेगोशिएटिंग पावर अधिका बढ़ेबा कथा एम्प्लॉयमेंट फील्ड रे. एंड द बॉयज आल्सो शुड सपोर्ट दिस. द बॉयज आल्सो शुड सी दैट देयर शुड बी नो जेंडर गैप. इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट एन इगालिटेरियन सोसाइटी, जदि आमे समस्ते गोटे समानता भित्ति थिबा
समाज स्वप्न देखा आम समस्त जब गोटे एमतिया स्वप्न एमतिया समाज कथा भाविबा जे जितेबाला आम 21st सेंचुरी बंचुचे जे जितेबाला कि समस्ते कहारी भी कौन प्रकार अधिकार क्षुण्ण हेब ना पुरुष नारी निर्विशेष समस्त को सबू से जहाँ हक ता मिल लेट्स एनकरेज आवर गर्ल्स टू गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लेट्स रेज आवर वॉइस where we see that there is a gap of payment, there is a gap in the wages of women, and it should be there should be a campaign also against it. Along with the government, along with the state, we all should work together hand in hand for eliminating this discrimination which is clearly showing the unequal treatment of women in the field of employment. So that is how we can only bring up a society where inequality will not be there. That is how we can only dream or plan about a work field where gender equality is amply or gender equality is properly guaranteed, gender equality is properly maintained. आम जमती घर भितर आम चाहूँ कि जेंडर इक्वालिटी रहू, सोसाइटी चाहूँ जेंडर इक्वालिटी रहू, कम्युनिटी चाहूँ जेंडर इक्वालिटी रहू, देश में चाहूँ जेंडर इक्वालिटी रहू, दैट शुड ऑल्सो बी ensured gender equal situation, environment, ambience in the work field where the women are getting sufficiently paid for their work. At least they should be paid, they should surely be paid equal amount for their equal kind of work and responsibility which they take for the company or for the field or for the work. काम आउ निज व्यक्तिगत जीवन बालांस रखी संतुलन रखी स्त्री लोक मैंने बहुत कष्टे देती कंट्रीब्यूशन काम फिल्ड रे एवं से मैंने सब जो ये कंपटीशन भितर सब जो पड़ी था प्रतिद्वंदिता भितर पुओं सहित निजक सम्मान बोली सम्मान कर प्रतिद्वंदिता भितर ता सत्वे भी से जो कम पैसा पाती दैट वर्क से गोटे बहुत बड़ धक्का है काम करे. सो दैट शुड नेवर बी देयर. वी शुड ऑलवेज रेज आवर वॉइस फॉर एलिमिनेशन ऑफ जेंडर pay gap. Gender pay gap आदौ fair नुहे. This is unfair and you should also discuss among yourselves how much detrimental it is for the psyche of our women, how much bad it is for the workspace, how much unfair it is for the people who are working and contributing for our field. Thank you very much.